Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students and teachers, in this video we will solve the exercise of unit number 4 of CANTAB English book, and the name of the unit is In Spite of War, and this is a poem. So let's start solving this exercise. First of all, there is comprehension question answers. How does the poet use contrasting elements such as war and life's beauty to evoke emotional responses in the reader? The poet shows the sadness of war like death and sufferings and compares it with the beauty of nature like flowers and waves. This makes the reader feel both sadness and hope. Um, Okay, so what do flowers like lilacs, tulips, and pansies mean in the poem? The flowers show hope, beauty, and new beginnings. Even during war and sadness, they grow and remind us that life can still be beautiful. What things grow or stay strong even during war? Nature stays strong during war. And flowers like lilacs, tulips bloom, the sun rises, clouds play, and waves shine. What message does the poem give about the human spirit? The poem says that people can stay strong, hopeful, and happy even during hard times like war. How does the or you can say in the life challenges which we face in our real life, how does the poem make you feel? The poem makes me feel sad about war but also hopeful because it shows that life and beauty can survive. What words and images in the poem show sadness or loss? Words like war, death, suffering, hate, shame show sadness, and like guns may roar, cannon boom, and nightmare show the pain of war. Then there is some MCQs. According to Angela Morgan, despite death and destruction of war, life springs in the form of the natural beauty. Next, when pansies lift their eyes to mine, in this line the poet used the poetic device of personification. Number 3 answer is onomatopoeia. 4 answer is dystocia and elation, and the fifth answer is optimistic. Optimistic मतलब होता है जिसमें एक hope हो, pessimistic होता है जिसमें negativity हो, मायूसी हो. Okay, so now the next question is about summary, objective summary. Objective summary क्या होती है कि जिसमें हमें सब तमाम points वगैरह को हमें लिख देना होता है जो poem में कहा गया है. So summary क्या है? In spite of war की, the poem In Spite of War by Angela Morgan shows hope and strength during war, death and suffering. Even when guns roar and war brings shame, nature stays beautiful. Lilacs bloom, tulips grow along the path, and lilies lift their silver urns in the morning light. Flowers like pansies, daisies, and morning glories encourage courage and joy. The clouds play with the sea and shining waves remind us that life is fair and beautiful, and the poem tells us that despair and glory live side by side, and life can still feel joyful even during war and hard times. So ये होगी हमारी summary. नेक्स्ट इज वोकेबलरी. वोकेबलरी में यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ेंगे, कॉनोटेशन. कॉनोटेशन कहते हैं दो चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाऊंगी, डेनोटेशन और डेनोटेटिव मीनिंग एंड कॉनोटेटिव मीनिंग. तो डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन में क्या फ़र्क होता है? डेनोटेशन कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग को, और कॉनोटेशन कहते हैं कि वो उसका असल मतलब तो ना हो लेकिन वो हमने उसके साथ एसोसिएट किया हुआ है. फॉर एग्जांपल लायन. लायन क्या है? उसका डिक्शनरी मीनिंग क्या, उसकी डेनोटेशन होगी अ नेम ऑफ एन एनिमल, और यानी कि बहुत ही जानवर है, बहुत बड़ा सा, वेरी ब्रेव एनिमल, बहुत बिग एनिमल. तो ये हो गया लायन की डिक्शनरी मीनिंग, डेनोटेशन. व्हाट इज कॉनोटेशन? द कॉनोटेशन ऑफ लायन इज ब्रेवरी. हम वी कैन से दैट अली इज अ लायन, कि अली एक शेर है. वाई? बिकॉज अली इज सो ब्रेव. सो द मीनिंग ऑफ लायन इज द सेकेंड सेंटेंस इज कॉनोटेटिव मीनिंग. ओके, सो ये हो गया हमारा कॉनोटेटिव एंड कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन. अब करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ बताए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइल्डिश, ये कि एक बच्चे जैसा होना, और उसका कॉनोटेशन मीनिंग क्या है कि आप प्लेफुल होंगे, इनोसेंट से हैं पॉजिटिव में, और इमेच्योर होगा नेगेटिव में. यानी एक ही वर्ड हो सकता है उसके, या तो आप नेगेटिव मीनिंग में अगर हम उसको यूज़ करेंगे जो उसका असल डिक्शनरी मतलब तो ना हो, हमने उसके साथ एसोसिएट किया हो, लेकिन नेगेटिव मीनिंग में, जैसे यहाँ पे इमेच्योर है तो ये होगा नेगेटिव, तो ये उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कॉनोटेशन. और अगर इसी चीज़ को पॉजिटिव वे में बोलेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉनोटेशन. इसी तरह इसकी क्या सिंपल एग्जांपल है, जैसे अगर मैं कहूँ टीचर, सो टीचर का एक डेनोटेशन क्या है कि कोई भी बंदा जो आपको स्कूल में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, और एक और मतलब क्या हो सकता है, कोई भी जो हमें गाइड करे, रास्ता दिखाए, तो हम कहेंगे मेरा उस्ताद है, मेरा टीचर है. सो दिस टीचर इज ऑलवेज पॉजिटिव कॉनोटेशन. और चीप क्या है? लो इन कॉस्ट. और इनएक्सपेंसिव अगर हुआ कि भाई इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल कॉनोटेशन. और अगर हम कहें कि भाई बड़ा घटिया सा है, घटिया क्वालिटी का है, चीप क्वालिटी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉनोटेशन. यहाँ पे अलग अलग बता दिया गया है कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल क्या होते हैं. पॉजिटिव जिसमें हमारे हम पॉजिटिव मीनिंग में यूज़ करें, नेगेटिव कॉनोटेशन जो नेगेटिव मीनिंग में यूज़ करें, या एसोसिएशन उसके साथ थोड़ी सी एसईओ जो
पसंद ना आए हमें। और न्यूट्रल क्या होता है कि ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, जस्ट एक जर्नल बात है। अब क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। शी हैज़ अ मैंशन ओवरलुकिंग द सिटी and has eccentric fashion choices always attract attention. Then the old book had a musty smell and the detective had a nosy neighbor who noticed everything. So nosy मतलब जो अपनी जिसका ध्यान या जो हर वक्त ना तांग झांक में लगा हो। सो ये आपको 5-4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें बताना है इन बोल्ड वर्ड्स को कि ये कौन सी कॉनोटेशन में फिट आएँगे। तो ओवरलुकिंग क्या है? न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक बात बताई जा रही है कि द मैंशन जो है वो सिटी के ऊपर है और उससे हमें एक व्यू नज़र आता है। फिर क्या है फैशन क्या है? इट्स पॉजिटिव, चूँकि हमें पता चल रहा है कि भई अच्छी बात है, उसको बड़े फैशन का पता है और उसकी वजह से वो अटेंशन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। फिर क्या है? मस्टी स्मेल मतलब जो अच्छी ना हो, तो नागवार जिसे हम कह सकते हैं ना। तो मस्टी क्या है? नेगेटिव है ऑब्वियसली। और नोज़ी क्या है? ये भी एक नेगेटिव है कि हम ताक झांक कर रहे हैं, क्यूरियस हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगली चीज़ है टेंसेस। बहुत अच्छा इट्स टेबल बना हुआ है। इट इज़ रियली अ वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी गुड टेबल कि टेंसेस के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फिर प्रेजेंट को आगे बताया गया है कि सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। यहाँ पे आगे आपको मजीद बता दिया गया है कि स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव यानी जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी ना हो और क्वेश्चन भी ना हो, इसे कहते हैं अफर्मेटिव। पॉजिटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। फिर क्या है इसका स्ट्रक्चर है कंटिन्यूस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है। सो अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो समझने के लिए अच्छी चीज़ है। अगली चीज़ है कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स, वी हैव टू सॉल्व दीज ब्लैंक्स एंड द वर्ब इज गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड वी हैव टू पुट इट्स करेक्ट फॉर्म। सो करेक्ट फॉर्म्स इसमें क्या होगी, ये ज़्यादातर जो ये पैराग्राफ है ये एक दिया गया है एक प्रेजेंट फॉर्म में। तो इसको हम दो तरह कर सकते हैं, तो सबके सब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दें और जहाँ जहाँ टाइम मेंशन है एंड में बिल्कुल सेंस और फॉर, तो वहाँ पर हम लगा देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बेसिकली प्लानिंग का ज़िक्र है कि वो उठा, फिर वो ये करता है, फिर ये करता है। और इसी चीज़ को हम अगर फ्यूचर टेंस में लिखेंगे कि जब वो सुबह सवेरे उठ रहा है, फिर वो नमाज़ पढ़ेगा, फिर कुरान पढ़ेगा, फिर वो किचन में जाएगा, तो इस तरह भी ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ना कि इस चैप्टर में बात हुई है ना प्रेजेंट की, सारे टेबल्स भी आपको प्रेजेंट के नज़र आ रहे हैं। सो सूटेबल ज़्यादातर यही होगा कि हम इसको प्रेजेंट में ही इस एक्सरसाइज को फिल करें। अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को इसको प्रेजेंट में ही करवाइएगा। लेकिन अगर पेपर में जनरल क्वेश्चन आ जाता है और नहीं बताया हुआ कि प्रेजेंट से ही करें और अगर कोई फ्यूचर में कर देता है तो ये भी गलत नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अगली चीज़ है कि आपने नेक्स्ट दिए गए टेक्स्ट को पढ़ना है और उसके हर सेंटेंस को बताना है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और फिर हर सेंटेंस को नेगेटिव एंड क्वेश्चन बनाना है यानी इंटरोगेटिव बनाना है। सो हियर you can check it कि Amna, a ninth grade Muslim student, wakes up early in the morning before the Fajr prayer. She starts her day with a prayer, seeking guidance and blessings for the day ahead. ये सारी चीज़ें जो हैं you can check। ये हर सेंटेंस वाइज दे दिए गए हैं, इंतहाई आसान है। टेंस भी बता दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फर्स्ट करके बताऊँ, आमिना वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द फजर प्रेयर। तो ये वेक्स अप हमें बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये इसका नेगेटिव क्या होगा कि आमिना डज नॉट वेक अप एंड इंटरोगेटिव क्या होगा, डज आमिना वेक अप। और सेम विद द अदर। सो यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। इंतहाई आसान है, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की करेक्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना। सो ही हैज़ ऑलरेडी ईटन, देन आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड। Okay, so I have always dreamed and dreamt. Both are correct. One is the American English and second one is the common British English. So you can write any one of them. I have always dreamed of using one, let alone having one. Then when I went into my mother's bedroom to take Charles' passport, I have come. Then she has been living in that city for 5 years. Here we will use the present perfect continuous because there is a specific time given, which and another thing is for. Then we have not seen that movie before and they have just finished their homework and the team has won all their matches this season. So this is the solution. Now next is transitional devices. ये क्या होती हैं? इनको transition words भी कहते हैं and we use it to join paragraphs or sentences.
For example, I wanted to go to the museum, but I had to finish my homework. So the conjunction but introduces a contrast between the desire to go to the museum and the obligation to complete homework. तो यहाँ पे हमने but को use किया as a transitional devices. Similarly, next is the sun was setting, therefore it cast a warm orange glow across the sky. कि जो सूरज था वो गुरूब हो रहा था इस वजह से, therefore. So there is another transitional device. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंजंक्शन की मदद से वी हैव टू ज्वाइन टू सेपरेट सेंटेंसेस इनटू द वन सेंटेंसेस, यानी हमने दो अलग अलग दिए गए सेंटेंसेस को जोड़ना है कंजंक्शन की मदद से एक सेंटेंस में. सो शी वांटेड टू गो टू द पार्क एक सेंटेंस है, हर फ्रेंड्स प्रेफर्ड हाइकिंग अलग सेंटेंस है. तो हमने इसको किस तरह ज्वाइन किया, शी वांटेड टू गो टू द पार्क बट हर फ्रेंड्स प्रेफर्ड हाइकिंग. The teacher explained the lesson, yet, yeah, but both are correct. Some students were confused. You can study now, or you can relax and do it later. The car broke down, so, or therefore, both are correct. They had to call for assistance. The movie was entertaining, although the plot was a bit predictable. I tried to finish my homework early, but, or yet, both are correct. I still felt stressed. Next is a poem, A Wish, a very beautiful poem, and we will do is paraphrasing of the poem A Wish, written by Maxine Kendall. Stanza number one: maybe it is pointless to wish for lasting peace, maybe it is pointless शायद ये बेफायदा है to wish for lasting peace कि दायमी अमन की आरजू करना, for all mankind to lay down arms, तमाम इंसानों का हथियार डाल देना, for all fighting to cease, तमाम लड़ाइयों का ख़त्म हो जाना. It might seem useless to hope for eternal peace, for everyone to stop fighting and put down their weapons, and for all wars and conflicts to end. Stanza 2. Hope lies in a child's heart. उम्मीद एक बच्चे के दिल में है. Not yet turned to stone, जो अभी पत्थर नहीं हुआ. A mind free of prejudice. एक दिमाग जो तासुब से आज़ाद हो. A child not alone. एक बच्चा जो अकेला ना हो. The true hope can be found in the heart of a child whose heart has not yet become cold and hardened. A child's mind is still free from bias, and they are not isolated or abandoned. Or you can also write and which is not alone, it's also correct. Stanza 3. If all children of the world held each other's hand, they could do what we could. If all children of the world, अगर दुनिया के तमाम बच्चे held each other's hand, एक दूसरे का हाथ थामे, they could do what we could not, तो वो काम कर सकते हैं जो हम ना कर सके. Make a brotherhood of man, इंसानियत का भाईचारा कर सकते हैं. Paraphrasing, if all the children around the world joined together and held hands, they could create a true brotherhood until uniting all of humanity. And so this is the poem Wish. अच्छा, अगर आपके जहन में ये हो कि पेपर में क्या आएगा, तो देखिए पेपर में दो बुक्स हैं, एनबीएफ की बुक है और कैंटअप की बुक है. और एनबीएफ की बुक को भी अगर आप देखें तो उसमें कुछ तो प्रॉपर पोएम्स हैं, यूनिट से पोएम्स हैं, लेकिन कुछ पोएम्स हैं जो कि चैप्टर्स के अंदर भी हैं. तो हमें हम चूँकि इस 2025 में जो आपके बोर्ड के पेपर्स होंगे 9 के, दे विल बी द फर्स्ट पेपर आफ्टर चेंजिंग द रेफरेंस बुक्स. लेकिन हमें रिस्क नहीं ना लेना, तो इट्स बेटर कि हम सारी पोएम्स को ज़रूर देख लें, एटलीस्ट उसको समझ लें, उसके कम से कम उर्दू समझ लें, कि चाहे क्वेश्चन आंसर्स आ जाएँ उसमें से या चाहे पैराफ्रेजिंग आ जाए, सो हम उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें. सो that's why I have written its Urdu as well. So paraphrasing is, if all the children around the world joined together and held hands, they could achieve what we as adults have failed to do. They could create a true brotherhood and uniting all of the humanity. Next is paragraph. Here is a project, host a peace day celebration and other things. So because there is a paragraph in the board, so and this topic is important as well. So here is the paragraph on this topic. Importance of fostering peace in our global community. Peace is the foundation of a happy and prosperous world. This is the hook statement. In today's global community, it is more important than ever to promote peace and understanding among different nations and cultures. Without peace, conflicts and violence can cause suffering, making it harder for people to live happily and work together. Fostering peace allows us to focus on solving global challenges like poverty, climate change, and education. By respecting one another and embracing diversity, we create a world where everyone has the opportunity to thrive. Peace brings hope, unity, and progress, helping us build a better future for all. So, this is a paragraph. Okay, so I hope that you would understand the unit and it's all the exercise. Wish you best of luck.
and the PDF link will be given in the description, so you can easily download it as well. And if you are finding these videos beneficial for you, and if you are understanding, then kindly like it and subscribe it, so that so this is a little bit gift for me. Okay, so assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh.